Hello students, my name is Abhays and today I am going to help you solve level 1 mathematics part 1. It is about chapter number 1, relations and functions. But before we go further, I want to share some important information. We here at Abhays Karo have brought extraordinary courses for you so that your learning can be made easy. See, at Abhays Karo, what we give you is individual subject practice. Suppose you want to practice a special subject at Abhays Karo, तो आप क्या कर सकते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कोई भी एक सब्जेक्ट का पैकेज आप कंसिडर कर सकते हैं. राइट नाउ वी आर हैविंग अ स्पेशल ऑफर डिस्काउंट फॉर गुड सीईटी प्लस बोर्ड एंड हियर यू विल गेट वन सब्जेक्ट एट 349. हमारी रेगुलर प्राइस रहती है 699 बट हियर पर सब्जेक्ट यू विल गेट 349 एज अ प्राइस. इसमें आपको मिलेगा टेक्स्ट एंड वीडियो सॉल्यूशंस एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस. यू विल गेट 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड उसका एनालिसिस, उसका सॉल्यूशन सब कुछ उधर ही आपके ऐप में मिल जाएगा. आपको आपका पूरा जो रिजल्ट है वो आपके ऐप में ऑन द स्पॉट आफ्टर द रिजल्ट मिल जाएगा. सो दिस इज फॉर वन सब्जेक्ट. नाउ सपोज सम ऑफ यू वांट टू गो फॉर टू सब्जेक्ट, वी हैव दोस पैकेजेस एज वेल. फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स और एनी टू सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो. उसकी रेगुलर प्राइस है 1299 बट हियर in special offer we have 649 combo. Here as well you will get 4000 plus practice questions, text and video solutions with competitive analysis. And suppose you want to take the whole group, that is suppose if you are a student of group A and you want to go for PCM, that is physics, chemistry, maths, you will get 6000 plus practice questions which includes text and video solutions as well as competitive analysis. Yes, bio group वालों के लिए PCB है. The whole package generally goes for 1899 but special price is 949. अब यहाँ पे आपको अगर additional 15% डिस्काउंट चाहिए तो you could use my code. कोई भी पैकेज में हर एक चीज में आप ये कोड डालेंगे अगर Abhays 15 to get 15% additional discount over this price. Is that clear? So these packages will not last forever. Join fast. Okay, so dear students, we are going to start with chapter number 1, relations and functions. We are going to start with level 1 MCQs. Let's see question number 1. Let f maps n cross n to n minus 1 be defined as f of mn. This is the formula of the function is equal to m plus n. This will be the output. They are asking the function would be 1 1 and onto or not. So इस केस में we are going to judge two properties of this function. First property is a 1 1 function. Now students, what is 1 1 function? 1 1 function is a function in which every image in the codomain has a unique pre-image. मतलब कोई भी दो या दो से ज्यादा input value के लिए same output value नहीं आनी चाहिए. Let us check. If I take, see, what are my input values? Input values would be the ordered pairs of n cross n. तो मैं कोई भी दो natural numbers की ordered pair बना सकता हूं. For example, if I have an ordered pair 1, 2 and I apply my function f over it, my output will become what? My output will become 1 plus 2. That gives you 3. Okay. Now if I apply the function on another ordered pair 2, 1, what will be the output? That's correct. It will be 2 plus 1 gives me 3 again. यहाँ पे मेरे दो अलग अलग input value 1, 2 and 2, 1. These are two different input values. उस चीज के लिए output value जो है दोनों की क्या आ गई? 3 आ गई. So I can write here that f of 2, 1 is equal to f of 1, 2. But 2, 1 is not equal to 1, 2. है कि नहीं? So inputs are different but their outputs are the same. Therefore, f is many 1. f कैसा फंक्शन हो गया? many 1 फंक्शन हो चुका है.
हमारा f फंक्शन जो है दैट फंक्शन इज अ मेनी वन फंक्शन. सो नाउ हमारे मेनी वन वाले ऑप्शंस कौन से हैं? बी एंड डी. सो नाउ 2 out of 4 ऑप्शंस हैव बीन एलिमिनेटेड. अब मुझे टेंशन सिर्फ है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है. सो नाउ मेनी वन तो पक्का हो गया. अब हमको चेक करना है वेदर योर फंक्शन इज 1 sorry, whether your function is onto or not. Now, to check whether the function is onto, if I want to check whether the function is onto के लिए, for a function to be onto, what is the condition for the function to be onto? The condition is range of the function must be equal to codomain of the function. Yes? So, what will be the range of my function? If I keep putting natural numbers, how will the natural numbers start? It will start with 1 comma 1, which will give me 1 plus 1, which will give me 2, f of 1 comma 2, which will give me 1 plus 2, which will give me 3, so on and so forth. So, the range of my function will be equal to the set which starts from 2, then 3, 4, so on and so forth. This set will be equal to nothing but a set of natural numbers which does not include 1. Now, if the set of natural numbers does not include 1, that is nothing but my codomain of the function. Correct? So, that is why f is onto function as well. Correct? So, my option in this case would be many one and onto. Are we clear on that? I hope you understood it. So, now students will be starting with question number 2. Question number 2 is a question about binary operations. Binary operation is defined कि वो operation किस हिसाब से काम करेगा. For example, if this asterisk binary operation is applied to A and B, then the output would be what? Summation of cubes of the two input values. मतलब A star B is equal to A cube plus B cube. This operation is defined on the set of integers. What do we have to find? We have to find the value of 1 asterisk 2 asterisk 0. यहाँ पे जो ब्रैकेट है that will be performed first and उसके बाद बाहर की वैल्यू के साथ हम आउटपुट लेंगे. So let's start. We have 1 star 2 star 0. ओके, मुझे क्या पहले परफॉर्म करना है? मुझे पहले परफॉर्म करना है 1 star 2. 1 star 2 के लिए we'll start here. 1 star 2 is equal to 1 cube plus 2 cube. 1 cube plus 2 cube जब करेंगे तो you know that 1 cube is equal to 1, 2 cube is equal to 8, which gives me the value of 9. So my bracket value becomes 9. So this is going to be equal to 9 star 0. That will give me 9 cube plus 0 cube. My answer 9 cube would be 729 plus 0 is equal to 79. So option number B in this case is the correct option. Simple enough, binary operations, the basics. अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे लिए क्या लाया है. Question number 3 is asking, find the number of binary operations on the set containing elements 1, 2, 3 and 4. Now the number of binary operations is equal to what? N raised to n square, where n is number
of elements of the set। तो इस केस में मेरे सेट में कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है, तो माय आंसर वुड बी इक्वल टू व्हाट? 4 होल रेज टू 4 स्क्वायर, which gives me 4 whole raised to 4 square is 16. So my answer is 4 raised to 16. That is option number D. Simple as a feather. Okay, dear students, we'll be checking out question number 4 now. The number of binary operations on the set 3k such that 1 is less than or equal to k is less than or equal to n, where k and n belong to the set of natural numbers. Now this is very simple. We have already done the number of binary operations. Number of binary operations कितने होते हैं? That depends on the number of elements in the set. How many elements are there in the set? In this set there are n elements. So your formula would be n raised to n square. इसमें n number of elements हैं. The number of elements in this set is n. So your solution would be n raised to n square. Option number B is the correct answer here. Is that clear? I hope you understand the solution. Okay, dear students, we'll start with question number 5 now. If set A is equal to x such that x is a measure of an angle of a scalene triangle, then the number of equivalence relations containing ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें है मेजर ऑफ मिनिमम एंगल कॉमा मेजर ऑफ मैक्सिमम एंगल, ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस पॉसिबल है? सो नाउ अंडरस्टैंड, सबसे पहले व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन जो है उसमें 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। एन इक्विवेलेंस रिलेशन मस्ट सेटिस्फाई दीज 3 प्रॉपर्टीज। It must be reflexive, it must also be symmetric, and it must be ट्रांजिटिव। ये तीनों प्रॉपर्टीज जो रिलेशन सेटिस्फाई करता है दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ व्हाट काइंड ऑफ अ ट्राइंगल डू आई हैव? आई हैव अ स्केलीन ट्राइंगल। वेल दैट मींस कि मेरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो है वो अलग अलग है। सपोज दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल सी। ये तीनों एंगल्स अलग अलग है। व्हाट डज दैट मीन? इन तीनों में से कोई एक मिनिमम होगा एंड कोई एक मैक्सिमम होगा। Now that is up to me. So arbitrarily, because these 3 are arbitrary angles, A, B, C, I can choose any one angle to be a minimum angle. Suppose I choose the angle A to be the minimum angle. Then my ordered pair would be A, comma. अब maximum के लिए अगर B maximum है तो AB would be the ordered pair, and अगर C maximum है तो AC would be the ordered. Correct? How many relations which are equivalent and contain A, B and AC? We have 2 only relations. Only 2 relations will be such, A comma B and A comma C. Because एक minimum angle के लिए आपके maximum angle either B हो सकता है या C हो सकता है। Correct है? Now consider this symmetric है। That means जब मैं AB लिख रहा हूं तो automatically my BA is included in my equivalence relation. जब मैं AC लिख रहा हूं तो automatically my CA would be included. One more thing, if A is minimum, इन दोनों में से कोई एक ही maximum angle हो सकता है। Both will not be a maximum angle. या तो ये होगी ordered pair या तो ये होगी ordered pair. If my A is minimum, this will be the ordered pair or this will be the ordered pair. Correct or not? So एक रिलेशन मेरा बनेगा जिसमें ये है या तो ये है। सेकेंड रिलेशन दैट आई कैन हैव इज B
as a minimum angle. If my B is a minimum angle, now याद रखिएगा AB तो इंक्लूड हुआ तभी BA भी इंक्लूड हो चुका है. तो what do I need? Either it is going to be BC. तो B के लिए एक ही ऑप्शन बचा, एंड जब मैं BC सिलेक्ट करता हूं, that automatically includes CB as well. Yes or no? So this means कि मैंने ये जो तीन ऑर्डर्ड पेयर लिखी है, इन तीनों में से कोई भी दो ही ऑर्डर्ड पेयर एक साथ सिलेक्ट की जा सकती है. मेरे दो ही एक्सक्यूज मी, मेरे दो ही इक्विवेलेंस रिलेशंस पॉसिबल है which contain a measure of minimum angle and a measure of maximum angle. If my minimum is A, so I'll have A either with B as the maximum or with C as the maximum. Is that clear? If I have B as the minimum, तो मेरे पास वापस कितने ऑप्शन है? दो ही ऑप्शन है, BA and BC. Is that clear? So yes, in such a question you have only two equivalence relations possible. कोई भी दो इक्विवेलेंस रिलेशन यहां पे हमारे साथ पॉसिबल रहेंगे. सो योर आंसर वुड बी 2. दैट इज योर करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर? आई होप दिस वन वाज क्लियर.